Hi everyone, welcome to our channel Knowledge for All. I am Sunidhi Sachdeva and आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे a recent decision of the Supreme Court on arrest and its safeguards. It is Vihaan Kumar versus State of Haryana. ये डिसीजन क्लैट पीजी 2026 के लिए बहुत रेलिवेंट है क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 22 को बहुत ब्रॉडली इंटरप्रीट करा है इस केस में एंड सेकेंडली in the recent years also we have seen that the courts have been very mindful of the fact that the rights of the arrested persons should not be curtailed इसलिए recent years में भी कोर्ट्स ने बहुत सारे जजमेंट दी है जैसे कि पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देन प्रबीर पुरकस्थिया वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड उससे पहले 2022 में जजमेंट आई थी सत्येंद्र कुमार अंटल वर्सेस सीबीआई. सो ऑल दीज जजमेंट्स रिलेट टू अरेस्ट and its safeguards and the grant of bail. So that's how it becomes important for this year CLAT PG also. So before going towards the decision, let us see the background of the present case. So this Vihaan Kumar, he was arrested on 10th June 2024 at 10:30 AM. और एक FIR फाइल हुई थी इसके अगेंस्ट जहां पर ये सारे सेक्शंस में he was charged with which most importantly pertains to cheating and forgery. Then he was produced before the judicial magistrate on 11 June 2024 at 3:30 PM and he was arrested on 10:30 AM the previous day. तो मतलब 24 घंटों के बाद उसे वहाँ प्रोड्यूस करा गया बिफोर द मैजिस्ट्रेट. सो ही सेज that Article 22 Clause 2 of the Constitution as well as Section 57 of the CrPC has been violated. जो मैंडेट करते हैं कि अगर पुलिस अरेस्ट कर रही है तो उनकी ड्यूटी है कि विद इन 24 आवर्स दे प्रोड्यूस हिम बिफोर द एरिया मैजिस्ट्रेट. Then he says that the arrest memo and remand report did not mention the time of the arrest and that indicates the procedural violation. Further, he alleges that he was handcuffed and chained to a hospital bed during the hospitalization at the PG Rohtak and the same was confirmed and admitted by the hospital authorities. So this amounts to gross violation of Article 21 as well, which provides for the right to life and personal liberty. और right to life में आता है right to dignified life. And this is not what you call a dignified life. So इसके लिए a disciplinary action was initiated and the police officers were suspended and a departmental inquiry was ordered. Now for these two things, that he was arrested and then he was not produced before the magistrate within 24 hours, then secondly he was not informed of the grounds of arrest as well, and thirdly he was chained to the hospital bed. इन तीनों चीज़ों को क्लेम करते हुए वो पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जाता है, एक रिट पिटिशन फाइल करता है, बट वहाँ की हाई कोर्ट रिट पिटिशन डिसमिस कर देती है. सो ही फाइनली अप्रोचेस द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 क्लेमिंग वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 1 फॉर नॉट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट and then inhumane and illegal custody conditions. जो उसे हॉस्पिटल बेड के साथ चेन करा, that amounts to illegal custody. तो विहान कुमार के आर्ग्यूमेंट्स थे that he was not informed in writing or orally of the grounds of arrest at the time of arrest. So जब भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट करती है, then as per Article 22(1) and Section 50 of the CrPC, which has now become Section 47 of the BNSS. It is the duty of the police officer कि उन्हें arrested person को बताना होगा कि हम आपको इस वजह से arrest कर रहे हैं. These are the grounds. And there is a difference between the grounds of arrest and reasons of arrest. Grounds versus reasons. रीजन्स ऑफ अरेस्ट होते हैं जो जनरल होते हैं, जैसे कि वी अरेस्टेड दिस पर्सन सो दैट ही डज नॉट कमिट द सेम ऑफेंस अगेन, और वी अरेस्टेड द पर्सन सो दैट ही डज नॉट इन्फ्लुएंस द विटनेसेस और ही डज नॉट टैम्पर विद द एविडेंसेस. दीज आर द रीजन्स. एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स?
grounds are confined to the facts of each case. For example, in this case, the grounds were he had committed forgery and cheating. पर वो फॉर्जरी और चीटिंग उसने किसके अगेंस्ट करी, कब करी, कैसे करी, ये सारे ग्राउंड्स हैं. और ये ज़रूरी है कि पुलिस ऑफिसर इफेक्टिवली अरेस्टेड पर्सन को बताए कि इन ग्राउंड्स के बेसिस पे हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं. विहान कुमार के अकॉर्डिंग कोर्ट ने विहान कुमार के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर ने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ना तो ओरली बताए ना राइटिंग में बताए एट द टाइम ऑफ अरेस्ट. देन सेकेंडली, जो रिमांड ऑर्डर था जब उसे मजिस्ट्रेट के पास लेके गए थे, इट डिड नॉट मेंशन द टाइम ऑफ अरेस्ट विच रेज्ड डाउट्स अबाउट द इलीगैलिटी. व्हाई? बिकॉज पुलिस ऑफिसर क्लेम कर रही थी कि उन्होंने 10 जून को 6 बजे शाम में अरेस्ट करा था एंड ऑन द नेक्स्ट डे 3:30 PM उन्होंने मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस कर दिया था. सो इट वॉज इन विदिन 24 आवर्स. तो पुलिस ऑफिसर के अकॉर्डिंग इट वॉज लीगल. बट ये बोल रहा था कि उसे 10:30 बजे अरेस्ट करा था एंड फॉर दैट ही हैड आस्क्ड कि आप चाहे CCTV देख लो ऑफिस की, बट द सेम वॉज समहाउ कॉम्प्रोमाइज्ड एंड इट कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट. Then his other argument was that he was detained for over 24 hours without judicial order and the same is in violation of Article 22 Clause 2 plus Section 57 of the CrPC. ये दोनों सेम चीज़ें मैंडेट करती हैं कि अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है तो विद इन 24 आवर्स उसे मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा. देन उसने फोटोग्राफिक एविडेंस प्रोड्यूस करे ऑफ बीइंग हैंडकफ्ड एंड चेन टू द हॉस्पिटल बेड विच इज़ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड DK बासु गाइडलाइंस. और इस चीज़ का एडमिशन हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने भी करा. दे ऑल्सो एडमिटेड दैट सच पर्सन ही वॉज कन्फाइंड टू द हॉस्पिटल बेड. And then the respondents they asserted that we had informed his wife about the arrest. So that was not satisfying enough the constitutional mandate under Article 22 Clause 1. So these were the arguments of Vihaan Kumar. On the contrary, the state of Haryana, that is the police department, they allege that the Vihaan was arrested at 6 PM and was produced within 24 hours. The grounds of arrest were orally conveyed and also they had informed about the arrest to his wife. They argued that even if the arrest was not in conformity with law, the charge sheet that was filed later on, it cured any procedural irregularities and they claimed that the handcuffing was due to security necessity. और जिन लोगों ने भी हैंडकफिंग करी थी, जो भी पुलिस ऑफिसर्स थे, उनके अगेंस्ट ऑलरेडी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट हो चुकी थी एंड दे वर ऑल्सो सस्पेंडेड. सो नाउ द फॉलोइंग इश्यूज अरोज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. Number 1, whether non-communication of grounds of arrest to the accused violates Article 22 Clause 1 of the Constitution. Number 2, whether such non-compliance renders the arrest and custody illegal and whether subsequent remand or charge sheet cures the illegality. Number 3, whether handcuffing and chaining without prior judicial approval violates Article 21. And number 4, what is the magistrate's duty in ensuring constitutional compliance during remand? So in this case, the court gave a very, very detailed interpretation of Article 22. कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को बताना ज़रूरी है. ऑल्दो यहाँ पर कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट शुड बी फर्निश्ड इन राइटिंग. स्टिल इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर कि वो बहुत अच्छे से, बहुत ही इफेक्टिवली वो ग्राउंड्स को अक्यूज को कम्युनिकेट करे, क्योंकि जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक अरेस्टेड पर्सन को पता ही नहीं चल पाएगा कि उसे किस चीज़ के लिए अरेस्ट करा है. जब तक उसे ये नहीं पता चल पाएगा, हाउ विल ही एबल टू प्रिपेयर फॉर हिज डिफेंस. सो दैट्स हाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत इफेक्टिवली ये चीज़ कम्युनिकेट करी जाए. एंड इट वॉज अ सजेशन कि वो राइटिंग में भी हो सकते हैं, दो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एवरी केस. In Pankaj Bansal versus Union of India,
एंड प्रबीरपुर कस्थिया केस, ये दोनों केसेस 2024 में आए थे एंड दे पर्टेन्ड टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द PMLA विच इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। वहाँ पर कोर्ट ने बहुत सिंपल और क्लियर शब्दों में ये बोला था कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आपको फर्निश करने हैं इन राइटिंग। तो अगर PMLA है तो आपको राइटिंग में करने पड़ेंगे। वहाँ की उन्होंने सेक्शन 19 को इंटरप्रेट करते हुए ये चीज़ बोली थी। बट अगर जनरल सेक्शंस ऑफ IPC में आप अरेस्ट करते हो तो आप सेक्शन 50 देख लो या आप आर्टिकल 22 देख लो, वहाँ पर ये चीज़ लिखी है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट करने पड़ेंगे, पर ये नहीं लिखा कि ओरली करने हैं या राइटिंग में। तो इसमें कोर्ट ने बोला कि अगर आप राइटिंग में कर देते हो तो ये फुल फ्लेजेड प्रूफ बन जाता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करा है। तो अगर वहाँ पर आप ग्राउंड्स कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, सो इट विशिएट्स द अरेस्ट एंड बिकॉज द अरेस्ट इटसेल्फ इज नलिफाइड, so the continued custody also becomes unconstitutional. And if the arrested person claims that he was not informed about the grounds of arrest, then the burden of proof for showing compliance with Article 22 Clause 1 lies on the police or investigating officer. Then the court held that the subsequent actions like filing of charge sheet or remand orders do not cure the original illegality. Then the court emphasized that statutory restrictions on bail do not override constitutional violations. तो अगर यहाँ पर कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि जो अरेस्ट था दैट इटसेल्फ वाज इलीगल, नाउ बिकॉज दैट अरेस्ट वाज इलीगल, तो जो कंटिन्यूड कस्टडी थी दैट वाज आल्सो इलीगल एंड इट वाज इमीडिएटली डायरेक्टेड दैट विहान कुमार बी रिलीज्ड ऑन बेल इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके अगेंस्ट चार्जशीट भी फाइल हो गई है, राइट। And then the Supreme Court also emphasized upon the duty of the magistrate that he has to actively inquire about compliance with Article 22 Clause 1 at the time of remand, and remanding an illegally arrested person violates the judicial duty. So, in short, the Supreme Court declared that the arrest of Vihaan Kumar was illegal. Why? Because the police officer failed to communicate the grounds of arrest to him. And then because his arrest was illegal, his continued custody and the remand order was also illegal and unconstitutional. इसलिए कोर्ट ने बोला कि उसे इमीडिएटली बेल पे रिलीज कर दिया जाए। नाउ फॉर दिस टॉपिक देयर आर अ फ्यू की कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो आपको ध्यान रखने चाहिए। इट इज आर्टिकल 21, 22 पूरा अच्छे से रीड कर लेना इंक्लूडिंग ऑल द क्लॉजेस, then section 50 CrPC, 57 CrPC and section 47 of the BNSS which is the same as section 50 of the CrPC. तो जब आप अरेस्ट पढ़ोगे you have to read article 21, 22 and the relevant provisions of arrest that are provided under CrPC and BNSS in complete details. इसके साथ साथ यू कैन रीड द लैंडमार्क जजमेंट्स ऑल्सो। एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी जजमेंट में कोर्ट ने क्या बोला था। इंपॉर्टेंट वंस आर पंकज बंसल, देन प्रबीरपुर कस्थिया, देन DK बसु। ऑफ कोर्स दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट। ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें क्या फैक्ट्स थे, क्या इश्यूज बने थे और कोर्ट ने क्या हेल्ड करा था। देन जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ UP। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट द कोर्ट लेड डाउन अंडर आर्टिकल 22 and you can have a look, you can take a read. आप ये पूरी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। and if there is anything you can drop down in the comments. So that was all from my side. Thank you for watching.